Okay. So, is my voice clear? Voice clearly audible? Achhi? Okay. So, first test amaro open test thila. OS mains test series 2022 रो तारो हमें डिस्कशन टा करिबा. So amaro syllabus टा जा थिला amaro that was temples of Odisha or temple architecture of Odisha. Okay. Temple architecture of Odisha, that was our syllabus, and 6 questions were there. So now let us discuss this. So first question apanakara asila, discuss the type of temples found in Odisha. Okay, 250 words ର answer ଦେବାର ଅଛି. ଏବେ ସେଇଟା 15 marks ଆପଣଙ୍କର ରହିବ 250 words ପାଇଁ. Okay, so 20 ଜାଗାରେ ଏଟା 15 marks current pattern ହିସାବରେ. ତ 15 mark question ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ 10 minutes ନବାର ଅଛି. ଏଇଟା ମାଇଣ୍ଡ ରେ ଆଗରୁ ओके रेडी है कि रुहंतु कि 10 मिनिट भीतर मु सारिबे. तो सेथरे हमें केते पॉइंट्स दे परिबा, केते डाइवर्स पॉइंट्स दे परिबा. जदी गोटे रिक्वायरमेंट अछि गोटे फिगर रो ताले हमें से फिगर टा दे परिबो. ठीक अछि. इट इज ए पॉइंट टू डिस्कस द टाइप ऑफ टेंपल्स फाउंड इन ओडिशा. सो लेट अस सी कोन कोन एथरा हमर लिखिबार अछि. एटा हमें आपनकर जो ऐप अछि, ऐप रो जो टेस्ट सीरीज अछि सेठी देखिबे गोटे फोल्डर थिबो. तार क्वेश्चंस गोटे फोल्डर थिबो आ मॉडल आंसर्स गोटे फोल्डर थिबो. तो एगुडा आपनको सेठी मिलि जिवो. मॉडल आंसर्स फोल्डर रे यू कैन गेट इट. ओके. सो टाइप ऑफ टेंपल्स मु फर्स्ट टिके बेसिक डिस्कशन कर दिया. तारी ऊपर तापर हमें देखिबा. हमर जो कैनोनिकल टेक्स्ट अछि जेमति कि हमर शिल्प शास्त्र हे गला किंबा आपनकर भुवन प्रदीप हे गला. ए नाटा टिके मने रखिबे. भुवन प्रदीप, दिस इज वेरी इंपोर्टेंट बुक बिकॉज मोस्ट ऑफ आवर जो टेंपल्स रो बनेबार टेक्निक्स, मेकानिजम्स, रेशियो, प्रपोर्शन एगुडा सब भुवन प्रदीप रे प्राय दिया हिच. ओके. आमे जो डिवाइड करूछु टाइप ऑफ कलिंगन टेंपल्स को कि आपण रेखा देउळ कहले कि पीढ़ा देउळ कहले, ओके, कि खाखरा देउळ कहले, एगुडा सब बेसिकली से भुवन प्रदीप रो ही आसे छी. ठीक अछि. तो सेटा मु आपन को केतेटा पॉइंट्स जोडा बहुत इंपोर्टेंट सेटा कहबी, सेटा आपण लिखि देई परिबे. ओके. जो माने एटा YouTube रे देखुचंती कि ओपन प्लेटफॉर्म से देखुचंती, जो पॉइंट्स जोडा कुहा होची सेटा लिखि देई परिबे, नहले वीडियो पॉज करी कि निज पर्सनल नोट्स रे सेटा इनकॉर्पोरेट कर दे परिबे. ओके. तो एठी कोन ना, एठी टिके क्वेश्चन टा बुझंतु. से टाइप्स ऑफ कलिंगन टेंपल्स पचार. टाइप्स ऑफ टेंपल्स फाउंड इन ओडिशा. सो रिमेंबर ओडिशा भीतर हमें देखिले 5 प्रकार रो टेंपल्स हमें पाउछ. 5 टाइप्स ऑफ टेंपल्स वी आर गेटिंग. ता भितरु कलिंगन स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर रो हमर तीनटा टाइप रो टेंपल रहउची. आउ दीटा टाइप रो टेंपल आपण सेटा कलिंगन स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर रो पार्ट नुह, किंतु इट इज फाउंड इन ओडिशा. ठीक है. सो से हिसाब रे हमें कहबा कि 5 प्रकार रो टेंपल्स आपण को मिलुची ओडिशा रे. ओके. इन ओडिशा यू आर गेटिंग 5 टाइप्स ऑफ टेंपल्स. ओके. 3 as per Kalingan School of Architecture and 2 others. Okay. So 5 distinct types of temples based on their architectural features. कौन प्रथम 3टा हैला जोडा कि हमरा Kalingan School of Architecture रेखा देउळ, पीढ़ा देउळ एंड खाखरा देउळ. आउ बाकी 2टा गौरिया आउ हाइपोथेरल टेंपल्स. इवन सेथरे हमरा इवन आउटसाइड इंडिया इन्फ्लुएंस भी अछि. ओके. ग्रीक इन्फ्लुएंस भी, रोमन इन्फ्लुएंस भी अछि. ठीक अछि. So the first 3 types are mentioned in the canonical text like Bhuvana Pradipa or other Shilpa Shastras. Okay. So ei nata man rakhibe Bhuvana Pradipa. Now eita tike ei jo point ta write it down. तो भुवन प्रदीप रे रेखा देउळ केते प्रकार 36 प्रकार रो रेखा देउळ. ओके. ता ऊपर डिटेल्स दिया हिच 36 टाइप ऑफ रेखा टेंपल्स जोडा कि हमरो स्टॉक टेंपल का गले ओडिसा रो मींस हमर जो मेन देउळटा किंबा जोटा सैंटम जा ऊपर जो यू नो सैंटम ऊपर जो पोर्शन टा सेटा प्राय हमर रेखा देउळ रुए. ओके. देन 5 टाइप्स ऑफ भद्रा देउळ और खाखरा सॉरी योर पीढ़ा देउळ. ओके. भद्रा हैला पीढ़ा देउळ. 5 varieties of भद्रा पीढ़ा देउळ एंड
3 varieties of khakra. ठीक अछि तो एगुडा भुवन प्रदीप रे मेंशन कराइछि तार डायमेंशंस केते होबा कथा ओके तो सेगुडा सब दिया हिछि सेहि पे हम कहूछु कि लिंगराज टेम्पल टा बेस्ट एग्जांपल ऑफ कलिंगन स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर व्हाई ऑल्दो आपनकर ताठू बड़ बड़ टेम्पल्स आपनकर अछंती ओके जेमति कि आपनकर हले पुरी जगन्नाथ मंदिर किंबा जोटा आगुरु थिला आपनकर कोणार्क टेम्पल ओके तारो जो देवलोटा थिला दैट वाज हायर loftier than your Lingaraj temple okay but still then लिंगराज टेम्पल को कहउची कि बेस्ट एग्जांपल काहे कि ना ए जो मेजरमेंट्स और प्रोपोर्शंस दिया आइची से हिसाब रे सेटा हैला बेस्ट ओके इट ऑलमोस्ट जहा प्रोपोर्शंस दिया आइची सेटा आपण लिंगराज टेम्पल रे पाइ पाइ ओके सो टाइप्स ऑफ सी खाली पचारची कोन केते प्रकार देउड़ मिलची तनो आमे सब प्रकार देउड़र किछि किछि कैरेक्टरिस्टिक्स लेखि परि ओके तो प्रथमे रेखा देउड़ स्टार्ट करू इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय देयर curvilinear spires ओके तार जो ओके शिल्प शास्त्र रे अपन जो देखिबे जस्ट लाइक ए ह्यूमन बीइंग ओके गोटे ह्यूमन बीइंग रो बॉडी हिसाब रे ही अपन को टेम्पल टाको ओके तो तार भी जो टॉर्सो पोर्शन टा ओके ऊपर हेड टा हे गला मस्तक पार्ट टा मझिरे जोटा हमें गंडी कहउछो के टॉर्सो पोर्शन टा सेही you will find it is curvilinear okay asi gote point re meet karuchu right so which soar above the sanctum sanctorum or the garbhagriha of the temple these temples have square base and a towering spire with a curvilinear outline exterior walls of these temples are adorned with intricate carvings and sculptures okay जोटा कि हम कलिंग स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर हमर एक्सटीरियर वॉल्स हला बहुत भलरे डेकोरेटेड हेची बट इंटीरियर सुडा प्राय हमर ओके क्लियर थाए ओके एते प्लेन थाए बोली हमें कहि परिबा मोस्ट फेमस रेखा देउळ ऑफ ओडिशा इज लिंगराज टेम्पल इन भुवनेश्वर ओके सो तर कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखिबा डिस्टिंक्टिव टावर लाइक स्ट्रक्चर ऑफ देउळ दैट ascends in curvilinear form okay tired vertical divisions called bhumis on temple walls okay एटा हला vertical divisions माने कोन ओके भूमिस भी कहला हमें पगस भी कहि परिबा ठीक अछि रथस भी कहि परिबा तेनु से हिसाब रे आमे ताको डिवाइड करूछु त्रिरथ मंदिर पंचरथ मंदिर सप्तरथ नवरथ मंदिर हमर जते बड़ मंदिर सब अछि जोडा इंपोर्टेंट टेम्पल्स और पंचरथ टेम्पल्स ओके व्हाट इट मींस बेसिकली कि गोटे आपनकर मंदिर रे आपन गोटे साइड रे ठिया हेले एठी केतेटा वर्टिकल प्रोजेक्शंस बाहरिछ तार जदी ग्राउंड प्लानिंग हमें करिबा जदी एई टाइप रो थिबो ओके 1 2 3 एटा त्रिरथ मंदिर ओके आउ ऐड कर दियंतु 4 5 ओके एटा पंचरथ हे गला सेमति सप्तरथ नवरथ इनिशियल टेम्पल्स जोडा जोडा थिला सोडा सु त्रिरथ मंदिर थिला ओके तापर पंचरथ टेम्पल्स हला आउ नवरथ टेम्पल्स हला ओके सप्तरथ नवरथ भुवनेश्वर रे सबुरो एग्जांपल्स आपन को मिलि जिवो ओके त्रिरथ रु नै कि नवरथ पर राइट तापर डेकोरेटिव स्कल्पचर्स एंड मोटिव्स अडॉर्न द टेम्पल्स एक्सटीरियर तो आपन को बहुत प्रकार रो motifs achi okay different temples re whether it is a Shivite temple whether it is a Vaishnavite temple okay kimba jodi sethre ame koi pariba ki olga ko Vaishnava au Shaiva sects guda ko chhadi dele bi olga bi temples achi okay to sethre temples exterior re apan kara bahut gude okay motifs apan paibe to jemti ki bho gote hela padiba seta detail re jetola ame theory class ko jiba okay and many other motifs are there ठीक अछि तापर जगमोहन और द असेंबली हॉल विथ पिरामिडल रूफ सेपरेट फ्रॉम द सैंक्टम सो एटा इवोल्यूशन रो सेकंड फेज रे आसिला प्रथम फेज रे हमर केवल खाली यूनिकैमरल मंदिर उडा थिला खाली गर्भगृह सेतरे थिला ओके जगमोहन नथिला जोटा नागर स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर रे आपण मुख्यशाला कहउचंती सेटा हमें कलिंग स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर रे ताको जगमोहन कहउछु ओके विथ पिरामिडल रूफ separate from the sanctum pyramidal रूप में पीढ़ा देउल ओके दैट इज द कॉम्बिनेशन मेन देउलटा आपन को रेखा हिथिबो आ जगमोहनटा पीढ़ा हिथिबो जोटा कि हमें धरंतु सन टेम्पल एट कोणार्क मंदिर हमें देखुछु एटा कोणार्क मंदिर सेटा एक्चुअली दैट इज द रेमिनेंट ऑफ द जगमोहन ओके सेटा एक्चुअल मंदिर नो ता देउलटा बहुत ऊंचा थिला जगन्नाथ मंदिर टू भी ऊंचा थिला ओके बट दैट हैज बीन डिस्ट्रॉयड
Okay, so the pyramidal roof, which is basically pida deula. Okay, and it is separate from the sanctum. Apanakara deula to alga set. Then there is a amlaka or a large stone disc. It crowns the temple, representing the universe. Okay, so amlaka shila. Okay, the components of a or the vertical divisions of a Kalingan temple. যদি question পড়লা এগুলা আমু করিয়া পে পড়িব. Okay, so এটা গলা রেখা দেউଳ তারপরে আসলা পিଢା ଦେଉଳ ସେମିତି so ପିଢା ଦେଉଳ ଗୁଡା ଯୋଉଟା ଆମେ ଜଗମୋହନରେ ଦେଖୁଛୁ ସେଗୁଡା ପିଢା ଦେଉଳ as the name suggests ପିଢା type ର okay ଆପଣଙ୍କର pyramid okay that means base ଟା broader ଥିବ ଆଉ apex ଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କମି କମି ଯାଉଥିବ so the ପିଢା ଦେଉଳ temples are marked by their stepped pyramidal roofs known as pidhas which consist of multiple horizontal layers that decrease in size as they ascend. These temples are generally smaller in size and are primarily used for assembly halls or mandapas, locally known as Jagamohan. The Jagamohan of Sun Temple of Konark is an excellent example of a Pida Deula. So, ସେଇଟା ସେଥିପାଇଁ ମନେ ରଖିବେ ଆମେ କଣ କହୁଛୁ ପିଢା ଦେଉଳର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କଣ ସନ୍ ଟେମ୍ପଲ ଆଟ୍ କୋଣାର୍କ ଓକେ ସବୁ ଟେମ୍ପଲ ର ଜଗମୋହନ ଲର୍ଡ ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପଲ ଆଟ୍ ପୁରୀ ତାର ବି ଜଗମୋହନଟା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଏ ପିଢା ଟେମ୍ପଲ ବୁଝିପାରିଲେ ତ तो जेहेतु एबे आउ मेन टेम्पल टा नाही कोणार्क रे जहा हमरो रेमिनेंट टा अछि सेटा ता जगमोहन टा अछि ताको से पे हमें भाबुछु पीड़ा देउलो बट तारो जो एक्चुअल देउलोटा थिला मेन टेम्पल ऑफ सन टेम्पल एट कोणार्क दैट वाज आल्सो ए रेखा देउलो ओके सबुटु ओडिसा रे सबुटु हाईएस्ट और लॉफ्टीएस्ट टेम्पल सेटा थिला जेतोले एग्जिस्ट करथिला ठीक अछि त तार कैरेक्टरिस्टिक्स कोन होबो ताले स्टेप्ड पिरामिडल रूफ मेड अप ऑफ horizontal layers called the pidhas. Okay, sloping eaves projecting from sides supported by curved brackets. Okay. Then square or rectangular floor plan lavishly decorated with intricate carvings and sculptures, Baharoda, and Jagamohana is the primary focus as opposed to the sanctum. Okay, assembly hall is the primary focus. Kahinkina assembly hall suda sabu pidha okay deula oda thandi. Se jo amara canonical text achi okay according to that this temple is basically like a human body so apna garbha graha kohchandi okay which is like the womb right seta pura dark thai okay tapare jodi ame dekhiba tar jo different mastaka ame kahilu okay gondi tapare kahilu ठीक jongha ame कहूछु okay these are actually the vertical divisions of a Kalingan temple right ତେଣୁ ସେଠି ସେଇ ଜିନିଷଟା ସେ କହୁଛି according to this Shilpa Shastras this husband and wife କେମିତି couple ଗୋଟେ ଥାଏ ଠିକ ସେମିତି there is the ଦେଉଳ and the ଜଗମୋହନ ଦେଉଳ is considered to be the husband and ଜଗମୋହନ is considered to be the wife okay ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର height ର difference ଥାଏ ଠିକ ଅଛି ଆଉ ଦେଉଳଠୁ ବଡ Kalingan temple complex ରେ ଦେଉଳଠୁ ବଡ height ରେ କୌଣସି structure ରହିବନି which is quite opposed to the Dravidian school. आपण जदि मीनाक्षी मंदिर जिबे आपण जोटा देखौची आपणकर सब आपण मीनाक्षी मंदिर र गूगल जदि इमेज देखिबे जहां भी आपण सेटा देखा जाउची दैट इज एक्चुअली ओके सेटा तांकर गेटवे टा गोपुरम टा इट इज नॉट द एक्चुअल टेम्पल जोटा जदि देखिबे सेटा गोपुरम टू कम हाइट रे सेमती बहुत बड़ बड़ टेम्पल्स रो भी सेम जिंस रहिछि Dravidian school of architecture that in the complex the highest structure may not be necessarily the main temple ठीक अछि so तार मे भी तार जो गेटवेज जुडा जुडा गोपुरम जुडा सेगुडा भी बहुत बड़ होइतै पारे ओके बट Kalingan school of architecture रे देउळटा ही सबुठु बड़ हबो तापरे खाकरा देउळ so खाकरा देउळ temples feature a barrel shaped or cylindrical spire okay reminiscent of a okay khakara that is a pumpkin. The roof of these temples slopes gently upwards and ends in an amlaka, okay, circular ribbed stone at the top, which is often carried by a kalasha. जेमती कि हमारा वैतला मंदिर रे सेठी तीनटा आपण देखो ताको तीन मुंडी मंदिर भी ताको कहै जाउछ ओके बिकॉज़ सेठी तीनटा कलश किबा तीनटा तार ओके ऊपर तार ए जो सर्कुलर रिब्ड स्टोन्स करिका अछि ओके the Vaitala Deula temple in Bhubaneswar is an iconic example of Khakra Deula temple. Okay. So that is basically your Bhaumakaras
टाइम रे सेटा करा then characteristic कोन it is barrel vaulted or wagon shaped roof resembling a horse saddle okay barrel vaulted or wagon shaped roof तारो reason भी अछि okay जितने नागर स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर हमें पढ़िबा तो we will see you know there are structures like the or there are temple structures like the Vallabi and all एठी जदि हमें देखिबा खाखरा तार जो ऊपर रूफ टा तार रही सेटा गोटे वैगन वॉल्टेड रूफ बहुत टाइम में कौन हुए सेटा हॉलो भी थाए इन द सेंस कि सेठी सब आपण रखि परिबे ट्रेजर्स करिका ओके जेतेबेले एंशिएंट हम एंशिएंट इंडिया कथा कहूछु सेई टाइम रे सेतेबेले मेनली इंडिक रिलीजन सुडा थिला okay that is basically various sects of what we know as Hinduism so there was let's say Brahmanism thila Shivism thila okay Vaishnavism thila Brahmanism तापरे आपणकर बुद्धिस्ट किंग्स थिले जैन किंग्स थिले तो तांकर जहा युद्ध बुद्ध हुए से माने डिस्ट्रॉय करंती ने टेंपल्स उडा तेनु किछिटा कोन करंती किंग्स माने से माने कोन करिवे ना रिचेस उडा नै कि रखि दे ट्रेजर उडा सेठी रखि देबे ओके सो दैट ए रूफ रे ओके so that you know ke chita chambers are open chambers uda bhi thae so the khakra mundis are the semi cylindrical moldings running along the roof heavily ornamented with sculptures and intricate carving जोटा कि वैतल मंदिर रे हमें देखु छु usually smaller in size compared to Rekha and Pida Deola temples because तार स्ट्रक्चर टा ही सेमतिया तार गंडी रो स्ट्रक्चर टा ही सेमतिया इसे बहुत ऊंचा सेटा करी हबनी ओके so that is why it is usually smaller in size as compared to Rekha and Pida Deolas and mostly dedicated to female deities शक्ति पूजा प्राय हुए जेंति वैतल मंदिर रे चामुंडा देवी को पूजा हुए ओके तो एटा हला एई तीनटा हमरो भुवन प्रदीप रे दिया हिच आउ भी दीटा टाइप रो मंदिर हमें पाउछु ओडिसा रे जोटा कि नॉट एग्जैक्टली ए पार्ट ऑफ योर यू नो कलिंगन स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर तो प्रथम हला जो गौरीय मंदिर ठीक अछि जोटा कि हमरे 64 योगिनी मंदिर ओडा रोच ओके so the Gauriya Deola temples are characterized by semi cylindrical roofs which resemble the back of a boar or a Indian bison these temples have shallow curvature and a simple unadorned exterior बहुत क्षेत्र you know artistic काम होइन right 64 yogini temples in Hirapur and Ranipur Jarial are examples of Gauriya temples तापर आसला the hypaethral temples okay एगुडा रे टिके आपनकर फॉरेन इन्फ्लुएंस भी आपण पाउछन मेनली पुरी रे किछिटा जगह रे एबे भी एटा एग्जिस्ट करूछ these are open air shrines with no roofs allowing for natural light and air to pass these temples are designed for outdoor worship and have a platform or altar for offering due to their open design hypaethral temples are less common in Odisha however some examples can be found in ancient city of Puri but eta our main point amu lekhyar achi has okay Roman influence ठीक है तो so these are the 5 temples that you will find in Odisha तापरे गोटे 1 की 2 लाइन रो you can go for a conclusion ठीक है बुझि परले so 5 types of temples 3 from the Kalingan school of architecture and 2 other type of temples आपन रोच ओके सो एटा 10 मिनिट्स रे मते सारीबार अछि तो ये जेति की पॉइंट्स देछि सब पांचटा जाक टेंपल्स रो ताको तो केबे भी मु लिखि परिबिन सो यू ट्राई मॉडल आंसर को देखि कि अपन ट्राई करंतु लेखिया पे ये सब जिंस ओडा केते टाइम हमकु लागुछ काइना अल्टीमेटली हम जो प्रैक्टिस करिबा सेटा टाइम हिसाब रे हमकु प्रैक्टिस करिबार अछि ओके फर्स्ट क्वेश्चन टा गला नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन with a neat diagram discuss the components of a Kalingan temple discuss the main features of Kalingan school of temple architecture ठीक है so again 2 parts of the question neat diagram आपन करया पड़ियो components of Kalingan temple सेटा आपन को देखिबार अछि then discuss the main features of Kalingan school of temple architecture okay eta again 10 minutes हमो करया अछि 250 words माने 10 minutes हमको मिलियो 15 मार्क रो क्वेश्चन ओके सो फर्स्ट आसिला तो डायरेक्ट गोटे लाइन रा इंट्रोडक्शन आपन दे परिबे कोन कि द structural details of a Kalingan temple has been given in canonical literature like the Shilpa Shastras and Bhuvana Pradipa. तापर directly start करते हैं. तो first वाला देवला, that is the sanctum sanctorum, main shrine of the temple where the presiding deity is installed. It features a curvilinear or
pyramidal roof. In Rekha Deola style, the Deola has curvilinear shikara, whereas in Pida style, it has a stepped pyramidal roof. Okay. Tapare asila Jagamohana or the assembly hall. A pillared hall in front of sanctum where devotees gather generally has pyramidal roof in Rekha Deola temples, while Pida Deola temples feature a stepped pyramidal roof. ଯେମିତି କି ବୈତଳ ମନ୍ଦିରର ଜଗମୋହନଟା ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ତ ସେଇଟା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ସେଟା ଆଉ ଗୋଟେ ପିଢା ଦେଉଳ ଟାଇପ। ଓକେ, ତ ଏଇ ଦିଟା ତାପରେ ଅଲଗା ଗୁଡା ଆଡ ହେଲା ନାଟ ମନ୍ଦିର ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ। ସୋ ନାଟ ମନ୍ଦିର separate structure in the temple complex where dance and music performance take place, usually has a flat or low pitched roof. Okay, केते जगह रे एटा separated अछि केते जगह रे लागि कि थाए। ठीक अछि, माने जगमोहन परे लागि कि थिबो। ठीक अछि, केते जगह रे एटा separate थाए। Okay, then the bhoga mandapa or the offering hall, a hall dedicated to offering food and other items to the deity, may have a flat or low pitched roof. तो एथर भी केते जिंस हमको देखियार अछि एथर आपण पर्टिकुलर टेंपल्स को जिबे लेट्स से फॉर सोमवंशीस को सोमवंशी जेतले सेमान टेंपल लेट्स से आपनकर लिंगराज टेंपल बनेले तो सेते बेले से माने कोन करथिले जगमोहन माने मेन देउलो जगमोहन करकी जेथिले लेटर ऑन द गंगस माने आसिले ओके इंपीरियल गंगस माने तो दे वर क्वाइट फेमस फॉर पॉपुलराइजिंग डांस एंड म्यूजिक ओके इन द टेंपल्स तेणु से नाट मंदिर से ऐड कले ओके लिंगराज मंदिर जो नाट मंदिर एंड दे आल्सो चेंज लॉट ऑफ थिंग्स जोटा कि आपण जतले आर्किटेक्चर और हेरिटेज पढ़िबे ओके हर हरि कल्चर जो बेसिकली कोन सोमवंशी मंदिरटा हेतला दैट वाज बेसिकली शिवाइट टेंपल ओके एंड दीज इंपीरियल गंगास वर मेनली वैष्णवाइट्स ओके सो सेठी आपण देखिबे अलगा जेमती मुक्तेश्वर टेंपल हे गला ओके सेठी कोन आपणकर आयुधटा गोटे त्रिशूल okay because that is basically a Shivite temple but Lingaraj temple re ayudhata trishula no trident no okay kono seta that we will discuss but from there the synthesis of Vaishnavism and Shaivism okay tara gote bahut bada seta the harihara culture jota ame kochu okay pinaka right that is basically the ayudha. We will discuss that. सेटा cultural point of view रे भी बहुत ही important. कहना से जो time थिला बहुत जगह रे even now if you see in west in South India there is a complete divide between Vaishnavites and Shivites. So Vaishnavite जे CA mainly Shivism को माने नहीं and vice versa. Okay, they are very like completely different domains अपना कहि परिबो. Okay, ओडिसा रे तार proper synthesis अछि माने एठी प्राय लोक से माने जो माने हिंदू रिलीजन को मानती से माने शिव भक्त भी थांती आउ विष्णु भक्त भी थांती राइट एनीवे तापर एटा फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन हैज बीन एड्रेस्ड नीट डायग्राम आपन सेटा करया पड़ियो एठी ओके तापर अच्छा डायग्राम दी प्रकार कर परिबे गोटे हैला तार जो लेट्स से वर्टिकल डिवीजन ता देखै परिबे बट एठी कंपोनेंट्स पचरची माने रादर आपन ग्राउंड प्लान ता देखै देले बेस्ट हो यू कैन शो द ग्राउंड प्लान. So main features of Kalingan School of Architecture, vertical division of the temples. Okay, तो temples उड़ा vertical division जदि हमें देखिबा तो ताकु first ऊपर तळ को divide कले. Okay, एटी तळु देछि बाड़ or the base, गंडी okay or the body or the torso हमें कहि परिबा आ मस्तक रहला आपनकर head टा. Okay, तापरे बाड़ right. So the बाड़ comprises of 5 horizontal moldings called the pabhaga. Okay, lower janga, bandhana, upper janga and baranda. ठीक है इतने डिटेल्स दरकार नहीं बट जानी थांतु जेहेतु पेपर 1 रे एथर को ओके टिके माने डीप क्वेश्चन आसीबो तो जनरल जिंस तो समस्त लिखिबे आपन को टिके बहुत डिफिकल्ट नु हो आपन तो समस्त जे मंदिर जाउचंती ताको जस्ट विजुअलाइज करके आपन जानिले एई पार्ट टाइटा इट बिकम्स वेरी यू नो इंटरेस्टिंग एंड इजी right. Gondi is the curvilinear or pyramidal structure above the bada which houses the deity. Mastaka is the top part of the temple consisting of element like beki. Beki कोटा जोटा कि आपनकर gondi आ mastaka को लागु जे हमर जेते neck ओके बेक हमें कहू तो बेकी हैला सेटा ओके कनेक्टिंग पोर्शन तापर अमलाक तो से जो गोल येटा अमलाक एंड अमलाक शिल ठीक अछि आ तापर कलश कलश ऊपर आपनकर आयुधटा थाए जेमती वैष्णवाइट टेंपल्स रे जेमती
Lord Jagannath temple रे सेटा सुदर्शन चक्र अछि. Okay, that is the main weapon of the chief deity. Okay, so सेटा हला आपणकर आयुध कलश उपरे आपणकर आयुध तापरे पुनी बाना भी आपणकर रहबो. ठीक अछि. Then extensive ornamentation. बाहर साइड रे exterior रे हमरो extensive ornamentation हुए, interior रे एते न थाए. Kalingan temples are known for their elaborate carvings and sculptures depicting deities, mythical creatures, floral patterns, and scenes from epics. These intricate designs are visible on pillars, walls, ceilings, and door frames. Tapare importance of Jagamohana. Unlike other temple architectures, the Jagamohana in Kalingan temples plays a significant role, sometimes even overshadowing the Deula. In Pida Deula's Jagamohana is primary focus with more elaborate design. Okay, Pida Deula Jagamohana ta basic prominence taku diyaichi. Then variety of temple styles, which we have already seen. Kalingan architecture incorporates various temple styles like Rekha, Pida, Khakara. It is traditional. And Gauri and Hypathral be apart Depari. Okay, although that is not part of Kalingan school of architecture. Okay, each style showcases unique features, allowing a diverse range of temples within Kalingan school. Then adaptability and integration. There are features codes. Adaptability and integration. So Kalingan architecture demonstrates high degree of adaptability and integration of different architectural styles. So, for example, Pachiri, okay, which is not a common feature. Okay, but seta ame bahut jagah re pauchu, Lord Jagannath temple ame pauchu. Okay, elements from other temple architecture as well as Islamic features have been seamlessly incorporated in the Kalingan style. Not only Islamic features, even other features. Roman, okay, Greek, mainly Roman features apna hypathral temples re apna pai paribe. Okay, focus on sanctity of space. Kalingan temples are designed to create a sacred space for worship with specific attention to the placement of structure within the temple complex. Koti konta rahibo. Okay, so seita Shilpa Shastra re properly diyaichi. The layout of the temple complex is intended to guide devotees through a spiritual journey leading them to the sanctum sanctorum. Okay, तो प्रदक्षिणा पथ अछि आपनकर जोडी आपन चारिपटे तार बुलुचंती तार भी पुनी different gods को पाई सेटा different अछि. Okay, for example, Vaishnava temples rate is different. Shivites, Shaiva temples rate is different. Shaiva temple रे आपण पूरा full circle केबे भी आपण नियंत्रित, right? Half circle नहीं कि पुनी आपण फेरिवे. So there are different rules for different types of deities. Okay. तापरे stone carving techniques. Kalingan temple architecture showcases exceptional stone carving techniques. Expert artisans created detailed sculptures and relief on sandstone, laterite, and okay, chlorite, bringing the temple walls to life. So this is basically material techniques usage. Integration of art and dance. Okay, जोड़ा कि Gangas माने mainly ताकू. Kalingan temples often feature a Nata Mandira, which highlights the importance of art and dance in the religious and cultural life of the region. The Nata Mandira serves as a venue for classical Odissi dance and other performing arts. Tabare, 9th point. Temple as cultural and educational centers. So Kalingan temples have historically been centers for not just religious activities but also cultural and educational pursuits. Many temples hosted scholars, poets, and artists promoting the development of literature, art, and philosophy. Then construction techniques. So Kalingan temples were built using dry masonry technique. Okay, it underline for you. Wherein precisely cut stones were laid without using mortar. The stones were interlocked using a male and female joint system. Okay, points are both important. There are structural. Okay, the structure is ensuring stability and durability of the structures. Okay, so this is important. इथरे बहुत गुरे 12-15 पॉइंट्स देछि केबे भी हमें लिखि परिबेनी सेटा 10 मिनिट रे किंतु एटलीस्ट 6टा पॉइंट तो लिखि परिबा दीटा पार्ट अछि क्वेश्चन तो आपण जो आपनकर रनिंग नोट्स बनौचंती एटलीस्ट यू राइट द हेडिंग्स एंड जो पार्ट्स रा मु अंडरलाइन करछि. Okay, then sacred geometry and Vastu Shastra. So Kalingan temple architecture follows principle of sacred geometry and Vastu Shastra, the ancient Indian science of architecture, जोड़ा कि भुवन प्रदीप रे properly देइछि सेटा. Okay, for example, आपनको गर्भ गरेटा एमिति direction रे रहइबो कि first rays of the sun सेटा तारि ऊपर पड़िबो. Okay, otherwise generally it will be dark. Right, the temples are
designed to harmonize with the natural environment and cosmic energy, enhancing the spiritual experience of devotees. Okay. Tapare iconography and symbolism. So Kalingan temples often feature a rich and diverse range of iconography, including various forms of deities, mythical creatures, and scenes from Hindu mythology. The iconography and symbolism employed in temple carvings were meant to convey deeper spiritual and philosophical meaning to the devotees. Okay. Tapare 1 ki 2 lines rame conclusion de pari. ठीक अछि. Jette simple English lekhibe marks apanଙ୍କର sete ଭଲ ଆସିବ. Right? So these are the first two questions. Let us go to the third one. Se କହିଥିଲେ ନା ଆପଣ ଗୋଟେ neat diagram କରିବା ପାଇଁ. So ଆପଣ a diagram ଟା କରିପାରିବେ. ଏଟା ହେଲା ତାର vertical division ଟା. ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଅଛି ତାର ଯୋଟା କି ଆପଣ ତାର ground plans ଗୁଡା. Okay, a type ର ଆପଣ ground plans ର ବି କରି ପାରିବେ ସେଟା. Right? Any one figure you can find. Got it? Any doubts you are having? Then you can ask. सर डायग्राम टिका उतर शो करिवे अरे एटा आपनकर ना ये रे अछि देखि देबे कोथर कहले आपनकर से ऐप रे अछि ऐप रे जिबे सर पीडीएफ गुडा 2000 को टिके व्हाट्सएप ग्रुप रे शेयर करिवे ना ए पीडीएफ गुडा बेसिकली आपण ऐप थ्रू ही एक्सेस करिवे एटा डाउनलोडेबल की शेयरेबल की प्रिंटेबल नो क्वेश्चंस गुडा मे बी ये जिवो बट ये आंसर्स गुडा मॉडल आंसर्स गुडा यू हैव टू एक्सेस थ्रू द ऐप ठीक है ऐप थ्रू एक्सेस आप करिवे तो डाउनलोड भी होउनी ऐप रे ऐप को ही डाउनलोड होबो माने सेटा एक्सटर्नल ये को डाउनलोड होबो तो आपन को नोट्स बनाया पड़िबो से उथरो बुझ पाले तो जस्ट थोड़ी कही दउची एटा हला आपनकर पिस्तटा दैट मींस तो जो आमे जोटा बेस कहूचु ओके तापरे आरंभ हलाटा जंग जोटा पुराना हमर मंदिर थिला त्रिअंग जंग सेटा थिला तापरे पंचअंग ओके तापरे ए टोटल टा बाड़ इज डिवाइडेड इनटू बारंडा जंग ओके तापरे गंडी आसी गला राइट सो एठी जदी अपन देखिबे बाड़टा बोथ रेखा देउल पीढ़ा देउल ऑलमोस्ट सेम थाए ठीक अच्छे तापर आसला गंडी गंडी पोर्शन रे डिफरेंस अच्छी ये दीटा ठीक अच्छे तो यही जो गोटा देखुं मझे जोटा आपंकर रहा वर्टिकल प्रोजेक्शन टा ताको राहा पग जोटा कह और द सेंट्रल वर्टिकल प्रोजेक्शन ठीक अच्छे तापर अनुराहा पग गुड़ा थी साइड रे तार ओके तो डिपेंडिंग ऑन सेटा त्रिरथ कि पंचरथ मंदिर सेटा तार 3टा वर्टिकल प्रोजेक्शन कि 5टा कि 7टा कि 9टा जहाँ भी थी ओके तापरे अम्ल एगुड़ा भूमि ओके एटा गंडी पार्टा तापरे एटा हम जो बेकी देखुतलु एटा आपनकर गंडी एटा आपनकर मस्तक गंडी और मस्तकटा जोटी मिसुची एटा बेकी पार्टा ओके आ एई पार्टा हैला अम्लाक तापरे एटा कलश ऊपर आयुध आ तापरे बाना भी सेतरे रह परिबो ओके नाउ कम टू क्वेश्चन 3 discuss the stages of evolution of Kalingan temples. It will be 10 minutes to 250 words. Okay, current structure re 15 mark ro eta asibo 20 mark ro to amaro generally expect karibani. So again 10 minutes se mate saribar achi. Okay, एटा बहुत important अपन एतले निजे प्रैक्टिस करचंदी आ ऊपर बेसी फोकस करिवे कि मु केते समय रे सेटा सारुछ. ओके एमति नै कि एटा मु 25 मिनिट बसी लिखिबी ताल तो बहुत भलो रे लिखि परिबी राइट. सो evolution of Kalingan temples first stage apankara hela okay early Kalingan stage there is 7th to 10th century simple and austere temple designs initial development of rekha deola pida deola styles limited ornamentation and sculptures predominantly built with sandstone smaller temple structures eti mainly I would point se buli gala jota ki sabutu important mainly unicameral तामाने कौन केवल गर्भगृह ओके जगमोहन है नथला जगमोहन हैला केते बेले परशुरामेश्वर मंदिर रु हैला ओके ता आगुरु जेते सब मंदिर थिला जेमति कि हमर लक्ष्मणेश्वर भरतेश्वर शत्रुघ्नेश्वर सेतरे दे आर ऑल यूनिकैमरल स्ट्रक्चर्स ओनली
Garbhagriha was there. Jagamohan was not there. Example, Jemti Keti. Okay, Parshurameshwara temple Radela, the 7th century oldest. Okay. Tapare se Mukteshwara temple Radechi. Middle Kalingan stage, actually Mukteshwara temple ro example eti no deiki ame dei pariba. Okay. Kaiki na egoda mainly unicameral structures thila. Se Bharateshwara, Shatrughaneshwara. Okay, seguda dei pare. Mukteshwara temple ta bahut hi well developed temple architecture. Tapare middle Kalingan stage, that is 11th to 12th centuries. Okay, more elaborate temple design, refinement and maturation of Rekha Deoda and Pidha Deoda styles, increased ornamentation and sculpture, use of both sandstone and laterite, larger and more complex temple structures. Okay, जोकि पंचायतन style रे सेगुडा एठी भी आपण ये करि परिबे. Ground plan or the style was mainly panchayatana. Panchayatana style Nagara school of architecture भी अच्छी ताते कोन ना it comes from two Sanskrit words pancha which is 5 and ayata means capturing. So the chief DTJ से आउ चार जण ancillary deities को capture करी रखछन. तेनु से रहिले मझिरे ओके जे chief deity आउ चारटा deity तांको चारि साइड रे रहिले सेटा पंचयतन स्टाइल. ओके सो एथरे लिंगराज टेंपल राजारानी टेंपल एगुडा आपण दे पारि. Then late Kalingan stage highly ornated at 13th to 16th centuries, highly ornate and sophisticated temple designs, development of Khakra Deola style, maximum use of sculpture and intricate carvings, use of chlorite and laterite for more durable structures, mega temple complex and structures. Okay, so tara joda zenith amara Kalingan school of architecture, that is the Sun temple at Konark. Okay, out Jagannath temple ro example apna eti dei paribe, right? So these are the stages. Okay, it actually depends on आपण को हिसाब रे ताको डिवाइड करछन. एटा हमें आर्किटेक्चरल फीचर्स टू डिवाइड कर. ओके डिफरेंट तार सपोज जदि आपण आउट के रिसर्च बेस्ड आपण जे देखिबे ताले किताब महल रो गोटे बुक गोटे तो हरिहर पंडा सर कर बुक अछि दैट इज हिस्ट्री ऑफ ओडिसा. आउ गोटे भी किताब महल रो बुक अछि बट सेटा सेटा बहुत के रिसर्च ओरिएंटेड अछि सेटा केसी पानी ग्रही सर कर. ठीक अछि कहूनी आपण किनी की पढंतु बट जस्ट नो that is also excellent book. सेथरे कोन बट सेटा रिसर्च ओरिएंटेड अछि. ओके सेथरे बहुत प्रकार रो एवोल्यूशन जतोले हैला टेंपल आर्किटेक्चर ता डिवीजन दी तीन प्रकार रो दिछ. सेटा हमरो जीएस रे एते दरकार पडिबो. एति की हमरो लिखिले सफिशिएंट होबो 20 मार्क क्वेश्चन. ओके एटा सर स्टार्टिंग रो देखिबे आउथरे हाँ गोटे जिनस आपण कर परिबे. गोटे जिनस आपण कर परिबे यू कैन टेक एटा तापर वीडियो भी जेतोले आपण प्ले करछन ऐप रे यू कैन टेक सम जदि आपण सिमती ताको ये करे भी जाय ताको फोटोस नै छी. ओके किंतु अगेन यू हैव निजर नोट्स बने दे भलो काहे कि ना ये जेते देई छी सेटा केबे भी लिखि होबनी. ओके ये पांचटा पॉइंट देई छी मु केबे भी पांचटा पॉइंट लिखि परिबिनी ता भीतर दि तीनटा बाहर करी जोडा बेस्ट सेटा मते लिखिवार अछि. अरे पूरा एक्सेस देई सर लिखि नहीं लिखि होबनी एक्चुअली तुरंत हमें भी ट्राई करिवा कि जेति की देई छी ताको 10 मिनिट्स रे लिखिबा. यू ट्राई अपन चेष्टा करंतु लिखिया पे 10 मिनिट रे अपन ता माने कोन मते देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल दीटा देई छी मु काई दीटा एग्जांपल दे गोटे एग्जांपल दे. ठीक अछि तो मते जिनछडा हला सब इंपोर्टेंट पॉइंट्स मोर रहिबो प्लस मु ठीक टाइम रे एमती सारुथिबी सेटा भी इंपोर्टेंट. सर सर हमें ये आंसर्स गुडा को आर मॉडल आंसर की हमारा आंसर्स लिखि के समय में शेयर कर परिबे की इवैल्यूएशन में. हाँ हाँ निहाती करिया कथा एडमिटेड स्टूडेंट्स अछंती आपण एटा मते पठे परिबे जोटा आदर्श सर दोचंती तांको क्लास रे सेटा आपण ताको लेखि की मते पठे परिबे मु सर को फॉरवर्ड कर देबी सी जो क्वेश्चंस रा दोचन आ जोड़ा एमती हमरो टेस्ट सीरीज रो हैला कि एटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैला आपण लेखि पठे परिबे कि चोस. सर हम ए जो तापर ओडिसा पर्सपेक्टिव जो सब अछि सिलेबस रे ताको हम कोन सर पेपर वाइज सारिबे की. हाँ आमे सब माने आपनकर एबे जो 30 तारिख रु आपनकर ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हे जिवो. ऑलरेडी तो इकोनॉमिक्स आदर सर स्टार्ट कर देलेनी आ 30 तारिख रु एथिक्स वेथिक्स सब भी स्टार्ट हे जिवो. तो सेटा
माने जो फैकल्टी की जो पेपर टा दिया नहीं नहीं सर फर्स्ट आपन रू को सेटा पार्ट जो आपन जो ओडिशा पार्ट नै छथि ओडिसा फर्स्ट हां हां सेटा हिस्ट्री मो सिलेबस देन वाइज ज्योग्राफी सारी देन पॉलिटी बस हां हां सेमती हां ना मिक्स एग्जैक्टली पेपर 1 पेपर 2 पेपर 3 पेपर 3 ओके से हिसाब रे ओडिसा रो जहां जहां मॉड्यूल्स अछि हमें ताको से हिसाब रे सारी कुछ बोले तो ओके सर पेपर 1 रो फर्स्ट सॉरी now come to question 4 discuss the contribution of Bhaumokaras and Somavamsis to the temple architecture of Odisha okay so Bhaumokaras and Somavamsis ए दी जनकर टेम्पल आर्किटेक्चर रे कोन कंट्रीब्यूशन हमको हमको सेतिक रे ही ताको लिखिबार अछि से माने कोन सोशल रिलीजियस एगो से सब सपोर्ट को जिबार नै so first असला Bhaumokaras करो contribution you can write 1-2 lines about them the Bhaumokaras that is 8 to 10 centuries and Somavamsis 10 to 12 centuries dynasties played a significant role in development of and patronage of temple architectures in Odisha okay ए दीटा डायनास्टी भी इंपोर्टेंट काहे कि ना एटा हिस्ट्री रे हमर जो डायनास्टिक ट्रेडिशंस ऑफ ओडिसा अछि ए दीटा जाक डायनास्टी अछि भौमकरस भी अछंती सोमवंशिस भी अछंती okay these dynasties commissioned and supported the construction of numerous temples contributing to evolution of Kalingan temple architecture so first Bhaumokaras introduction of Rekha Deola and Pida Deola styles Bhaumokaras were instrumental in early development of Rekha Deola and Pida Deola styles which later became distinctive features of Odishan temple architecture focus on Shivism and Shaktism. Okay, the Bhaumokaras primarily patronized Shivism, leading to construction of numerous Shiva temples like Shishireshwara, okay, Markandeshwara and Taleshwara in Bhubaneswar and Shakti temples like Vaitala in Bhubaneswar. Okay, so Shivism or Shaktism, but semane nije thile kon? Semane thile Buddhists. They were Mahayana Buddhists. Au semane ସବୁ ପ୍ରକାର ଧର୍ମକୁ okay flourish କରିବା ପାଇଁ ଦଉଥିଲେ. For example, semane although Mahayana Buddhist thile तांको टाइम रे एठी हमर वज्रयान बुद्धिज्म किबा तांत्रिक बुद्धिज्म ओडिसा रे आस्ते आस्ते ग्रो कला ठीक अछि तो देन शक्तिज्म शिविज्म इवन वैष्णविज्म को भी समान सपोर्ट करले तांकर बहुत गुडे यू नो रानी माने भी थिले जो माने की दे केप्ट नेम्स ऑन लॉर्ड शिवा एंड विष्णु ओके early development of Kalingan stage the reign of Bhaumokaras marked the early Kalingan stage of temple architecture characterized by simple and austere designs with limited ornamentation. Okay, examples amaro Khakara temple jota Vaitala mandirata. This temple features a Khakara Deola style roof and is dedicated to goddess Chamunda. Okay, so Shakti Puja iti hotila. Showcasing the diversity of temple styles under the Bhaumokaras. Tapare Somavamsis refinement of Kalingan temple styles. So anko pare asle. Okay, Bhaumokaras kara. The Somavamsis further developed and refined the Rekha Deola and Pida Deola styles, resulting in more elaborate temple designs and increased ornamentation. Patronage of various religious sects. The Somavamsis were more okay ecumenical in their religious patronage, supporting the construction of temples dedicated to different deities and sects such as Vaishnavism, Shivism, and Shaktism. Okay, development of middle Kalingan stage. The reign of Somavamsis marked the middle Kalingan stage of temple architecture, characterized by more complex temple structures, larger temple complexes, and greater use of sculptures and carvings. Then cultural development. The Somavamsis actively promoted art, literature, and culture, which led to flourishing of temple architecture and integration of various artistic elements into temple design. Right. Then Lingaraj temple, for example, they were constructed under patronage of the Somavamsis. The temple is prime example of mature Rekha style and showcases architectural prowess of the time. Okay, then Rajarani temple will be example say each. Okay. So again, it is upon 1 line to 2 line conclusion they paribe. In summary, the Bhaumokaras and Somavamsis dynasties significantly contributed to the evolution and development of Kalingan temple architecture. Their patronage and support for temple construction resulted in creation of numerous architectural marvels and continue to represent the rich cultural heritage of Odisha. Okay. Then question 5, eta 150 words. That is, it has 7 minutes. 10 marks question. 7 minutes complete karibar अछि. Eta पढिछि भी बहुत तरह एग्जाम रे मुक्तेश्वर टेम्पल रो टेम्पल आर्किटेक्चर. Okay.
So the Mukteshwar temple located in Bhubaneswar, Odisha is an important example of Kalingan temple architecture, often referred to as the gem of Odishan architecture. It is known for its intricate carving and unique features. The temple dates back to 10th century and is dedicated to Lord Shiva. Okay, so first it is a Rekha Deola style. Okay, the temple showcases the Rekha Deola style with curvilinear tower, that is Shikhara, and vertical divisions, Bada, Gondi and Mastaka. Then the Torana. Eita hela sabutu ame koi pariba gote distinct okay feature काहेकि ना हमरो बाकी जेते बड़ बड़ मंदिर अछि हमरो तोरण रो आउ बाकी माने जो गेटवे वेल डेकोरेटेड गेटवे ओके सेटा तार कांसेप्ट नै तोरण रो कांसेप्ट जदि हमें देखिबा बिकॉज सी व्हेन यू नो द ब्राह्मणिज्म किबा जोटा हमें हिंदुइज्म कहउछु ये ओडिसा रे स्प्रेड हबा बहुत आगुरु एठी बुद्धिज्म और जैनिज्म ओके एठी थिला तेनु सेठी अपन देखिबे देउल जोटा कि आपनकर बेसिकली जो स्तूपस गुडा थिला ओके तार गोटे इंपोर्टेंट पार्ट थिला द तोरण चारि डायरेक्शन रे चारटा तोरण थिबो गेटवे चारटा थिबो ठीक अछि बट এই जो टेम्पल्स गुडा हमें कलिंगन स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर टेम्पल्स देखुछु एठी तोरण प्राय हमें पाउन okay these gateways or beautiful gateways are more pronounced in Dravidian school of architecture okay jaku gopuram boli kuha jaise so torana kono one of the most distinctive features of Mukteshwar temple is the ornate arched gateway that is the torana that leads to the temple complex this feature is unique among Kalingan temples and showcases strong influences from Buddhist and Jaina architecture mainly the Buddhist stupas re eta nihanti babare eta okay torana sabu direction re tara gateway thai okay then the Jagamohana Mukteshwar temple features a Jagamohana or assembly hall with pyramidal roof which is typical of Rekhadeola temples then elaborate carvings the temple is adorned with intricate carvings including depictions of various deities floral patterns and scenes from Hindu mythology some of the most famous carvings include the dancing Ganesha and the uh, Lasya Nata okay there is dancing Shiva and Parvati then ornate doorway jota ame kochu the entrance to the sanctorum is highly decorated with carvings of various deities mythological figures and floral motifs the door jambs and adorned with images of navagraha and the dikopalas okay digopalo jota ame kochu to seta guardians of direction and the Ganga and Yamuna river eita amaro Kalingan school of architecture re jette bada mandir apan bada nei jo bi mandir dekhibe apanଙ୍କର दिगपाल रहिबे ओके आउ गंगा यमुना तांकर पर्सोनिफिकेशन रहिबे राइट देन स्कल्पचर्स द टेम्पल्स फीचर्स numerous sculptures of deities and mythical creatures including the Nataraja the lion headed okay gargoyle and the Naga Nagini there is the snake couple on the temple walls okay then you know se jo torano katha कहउछु se torano को आपण यदि पाखरे देखिबे okay तो सेठी आपनकर क्रोकोडाइल्स गुडा भी ओके आपनकर रहिछि सेठी ओके सो देन erotic sculptures in addition to religious iconography the temple also features erotic sculptures depicting amorous couples which is common feature in many Indian temples okay the technique iti kon use hoichi stone carving technique Mukteshwar temple demonstrates advanced stone carving technique of Kalingan artisans which is delicate and precise carving on sandstone blend of architectural styles okay so the temple represents a transitional phase in Kalingan architecture, blending the simplicity of early Kalingan stage with more elaborate designs and ornamentation of middle Kalingan stage. Okay, so Mukteshwar temple is a part of larger temple complex that also includes Siddheshwara temple, the side jota achi, a small shrine dedicated to Lord Shiva. और तार garden अच्छी मझीरे से garden सेपट साइड रे परशुरामेश्वर टेम्पल अच्छी तेणु परशुरामेश्वर टेम्पल मुक्तेश्वर टेम्पल सिद्धेश्वर टेम्पल गोटे ही कॉम्प्लेक्स रे कहया गले आपनकर अछि ओके सो एमती पर्टिकुलर टेम्पल्स यदि पढला एठी से 10टा पॉइंट देखछि इट इज इम्पॉसिबल टू राइट इट इन 7 मिनिट्स हमें चारटा की पांचटा मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स जोडा सेटा लिखिबो एथरे कोन निश्चित लेखा हबो तोरण ऊपर निश्चित लेखा हबो ठीक अछि देन इट इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा मैथ चलते हाँ जोटा मु अंडरलाइन करी तोरणटा भितर सबटु इंपोर्टेंट बाकी गुड़ा कॉमन जिंस सेटा आपण लिखिबा सब टेम्पल्स रे आपनकर ओके जगन आउर यार डिटेल्स अछि फॉर एग्जांपल गज सिंहस ओके मु आउ ता डिटेल्स को जाउनी एते काना लिखि होबनी केबे भी आउ तापरे से जो क्रोकोडाइल्स गुड़ा अछंती दीटा
ओके से तोरण रे राइट सो मेनी अदर मोटिव्स आर आल्सो देयर ठीक अछि आ तारो जदि हमें देखिबा गोटे पॉइंट हमें जदि मन थिबो थ्योरी क्लास रे पढुतलु कि एई पीरियड रे देयर वाज अ हार्मनी बिटवीन द बॉन्डी ओके एंड द बाड़ एंड दैट पार्ट ता माने कोन जदि पंचरथ मंदिर एटा पंचरथ मंदिर ताहले तारो जो बाड़ रहिबो सेटा पंचांग बाड़ रहिबो ओके होमोजेनिटी आसीगला यूनिफॉर्मिटी आसीगला किंतु आगर मंदिर रे अपन देखिबे से पंचरथ जदि भी हेइथिबो बट बाड़ आडू को देखिले ओके तळ येटा तार डिवाइड हेतिबो सेटा त्रिअंग बाड़ थिबो ठीक अछि त एई टाइम रे सेटा यू नो यूनिफॉर्मिटी तर आस्ते आस्ते बट एगुडा बहुत ही अधिक डिटेल्स हेजिबो आई डोंट थिंक 10 मार्क क्वेश्चन पे दरकार हबो ठीक अछि बट कांसेप्ट यू शुड नो तापर हम मो पाखे 5-6टा पॉइंट अछि जेति कि समय मते 4टा पॉइंट अछि लेखिया भी मु 4टा पॉइंट लिखि ओके एठी किछि मोर दरकार नहीं डायग्राम करिवो आइदर सी जदि पचारुची नहले गोटे 15 मार्क क्वेश्चन अछि ओके 10 मिनिट गोटे मिलुची सेठी मो गोटे डायग्राम करि परबी जदि इंपोर्टेंट ओके तापर लास्ट क्वेश्चन के आसंतु राइट ए शॉर्ट नोट ऑन आर्किटेक्चर ऑफ वैतला टेंपल जोडा मु कहले बे ओके तीन मुंडिया मंदिर भी देखते कहीं ना तार आप देखिए फोटोटा देखिए तो तार तीनटा ओके तार जो रूफ ऊपर तीन प्रोजेक्शंस तार आप अच्छे तो वैतल देवल also known as Tinumundiya Vaital temple is 8th century temple located in Bhubaneswar Odisha dedicated to goddess Chamunda an aspect of Durga the temple is an important example of Kalingan temple architecture particularly Khakara Devula style ओके तो फास्ट हला एटा तार जो तार फीचर्स उडा लिखिबे तो खाकरा देवळ सो इट इज प्राइम एग्जांपल ऑफ खाकरा देवळ स्टाइल कैरेक्टराइज्ड बाय स्टेप्ड pyramidal roof instead of curvilinear shikara found in rekha देवळ तापरे गर्भगृह sanctum sanctorum houses central deity that is Chamunda and features a low dark chamber with a flat roof Jagamohana or assembly hall with a pyramidal roof in line with Khakra Devula style the roof contains several horizontal layers that gradually decrease in size, creating a stepped appearance. Carvings and sculptures, the temple walls are adorned with intricate carvings and sculptures, including Chamunda, Shiva, Parvati, Ganesha, and other deities. There are also various mythical creatures and scenes from Hindu mythology depicted on the wall. Erotic sculptures, like many other Kalingan temples, the Vaitala Devula features erotic sculptures portraying amorous couples, showcasing the various aspects of human life and emotion. Then Khakara influence. The Vaitala Devula's Pidha Devula style showcases some influence from Khakara Devula style, with its elongated and curving roof resembling a Khakara, that is a type of pumpkin. Then iconography and symbolism. The temple's iconography is predominantly focused on theme of death and destruction, with the images of Chamunda, a fierce form of Durga, as well as other wrathful deities and fearful mythical creatures. Kana ei temple re tantric you know say सब rituals होता ना esoteric practices गुड़ा होता right so okay तो सेटा आपण तार आइकोनोग्राफी और सिंबोलिज्म अंडर रे देबे एगुडा सब टेंपल्स पई सेम जो भी टेंपल रो पडू एठे आपण आइकोनोग्राफी सिंबोलिज्म रहइबो सब टेंपल्स रे तो हेडिंग्स रो मन रख दियंतु इट विल बी मच हेल्पफुल इन गेटिंग गुड मार्क्स तापर टेक्निक रो कोन स्टोन कार्विंग टेक्निक okay it exhibits the skilled stone carving technique of Kalingan artists featuring delicate and detailed carvings on sandstone okay architectural transition so Vaitala temple represents a transitional phase in Kalingan temple architecture showcasing the evolving Pida Devula style and blending elements from other styles like Khakara Devula. Okay, then sacred tank. The temple is situated near a sacred tank. Okay, that is Bindusagara, which is considered to be source of spiritual energy and associated with many legends and myths. Okay, so Vaidal Devula is an important example of Pida Devula style in Kalingan temple architecture, showcasing unique features and intricate carvings that reflect the craftsmanship and artistry of the period. Its blend of architectural styles and rich iconography contribute to its significance as a landmark of Odishan heritage. Okay. सर ଏଥିରେ ଦି ବୈତଳ ତିନିଟା ଟେମ୍ପଲ ଟା କଣ ପିଢ ଦେଉଳ ଷ୍ଟାଇଲ କୋଉଟା ବୈତଳ ଟେମ୍ପଲ ଟା ନା ଏଇଟା yes sir ଖାକରା ଦେଉଳ ନା ହଁ
ଗୋଟେ ଆପଣ ଲାଇନ୍ ପଢିଲେ ପୀଡ଼ା ଦେଉଳ ବୋଲି। ନାଇଁ ତାର ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ଯୋଉ ଜଗମୋହନଟା ନା ରାଇଟ୍ ସେଇଟା ହେଲା ସ୍ଟେପ୍ଡ ଆପିୟରାନ୍ସ ତାର ଅଛି ସେଇଟା ପୀଡ଼ାଟା ଠିକ ଅଛି ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଜଗମୋହନ ଓକେ ସୋ ଦିସ୍ ଇଜ ବେସିକାଲି ଅଲୱେଜ ଏ ପିରାମିଡାଲ रूफ ଠିକ ଅଛି ଯେମିତି ରେଖା ଦେଉଳରେ ଥାଏ ରେଖା ଦେଉଳର ବି ଜଗମୋହନଟା ପୀଡ଼ା ଓକେ ଆଉ ବୈତଳ କିମ୍ବା ଆପଣ ଯୋଉଟା ଖାକରା ଟେମ୍ପଲ ର ତାର ଜଗମୋହନଟା ବି ଜେନେରାଲି ପୀଡ଼ା ଟେମ୍ପଲ ଓକେ ସେଇ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ରେ ଥାଏ ସେଇ ଜିନିଷଟା କହୁଛି କି ସାର ଇଭଲ୍ୟୁସନ ରେ ଓକେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଅଫ ପୀଡ଼ା ଦେଉଳ ଷ୍ଟାଇଲ ଇନ କଳିଙ୍ଗନ टेम्पल आर्किटेक्चर बट ସାର୍ वैतवा ଜଗମୋହନ टेम्पल ଟା इट इज କୋଉଟା ए ସାର୍ खाकरा टेम्पल କୋଉ ପାର୍ଟଟା? जगमोहनटा हला जोटा की हला सैंक्टम सैंक्टरम को लागि थाए जोटा ओके असेंबली हॉल ताको जदी हमें लॉजिकली कहि परिबा इंग्लिश रे आउ ताको नागर स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर रे मुखशाला कहन ठीक अछि जेमती आपण जो भी टेम्पल को जाउचंदी आपण को सीधा ठाकुरन को पाकु पळौचंदी ନାଟ आपण गोटे ନାଟ यारे ठिया कि सेठी प्रेयर्स करचंदी कि जा हॉलटा सेटा हला जगमोहन ମନ୍ଦିର ନାଟ ମଣ୍ଡପ ଡ୍ୟାନ୍ସ नहीं नहीं नाट्य मंडप इज ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ सेपरेट ହଲ୍। नाट्य मंडप है हाँ नाट्य मंडप भोग मंदिर से गुड़ा सेपरेट ओके एटा जगमोहन कथा कहूँ दिस इज द असेंबली हॉल और यू कैन आल्सो कॉल इट द मुखशाला इट इज द एमती हमें कहि परिबा इट इज द एडजेसेंट हॉल ओके टू द सैंक्टम ଜଗମୋହନ ପରେ सैंक्टम ଆମର ରହିବ ठाकुर ନାଟ जोटी ମଣ୍ଡପ। अछंती जो आउ तापरे भोग मंडप सीटा एक्चुअली ना ता स्ट्रक्चर टे डिफरेंट टेंपल्स रे सेटा डिफरेंट अछि ओके डिफरेंट टेंपल्स जेटे के ना भोग मंडप तो बहुत लास्ट अडकु से गुडा ओके ऐड हेतला नाट मंदिर भी से ठीक अछि सो एई चारटा हला तार मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट्स जोटा से क्वेश्चन रे हमें देखिलो प्रीवियस गोटे क्वेश्चन एंड जगमोहन एंड देउळ इज मैंडेटरी सर ना जेमति कि हस्बैंड वाइफ आपण कहले ना हाँ हस्बैंड एंड जगमोहन आपणकर देउलटा तो ऑब्वियसली आउ तापर जगमोहनटा ए दीटा अर्लियर माने कह गले कंपोनेंट्स भितरु तापर लेटर कंपोनेंट्स भितर एडिशंस रे आपणकर नाट मंदिर आउ भोग मंडप आसले ओके सर सर टिके स्टार्टिंग रू देख शो करिवे। एटा ए क्वेश्चन टा यस सर बैताल टेंपल यस यस सर स्क्रॉल यस सर स्क्रॉल करो। सर टिके यस सर ओके सर ओके फाइन तापरे सेकंड ओपन टेस्ट हमर थिला दैट इज रिलेटेड टू द डायनास्टिक ट्रेडिशंस ऑफ ओडिसा सेटा आज मु दे देछि टेलीग्राम रे और आपन ग्रुप रे भी दे देछि सो अपन ताको प्रिपेयर करके ट्राई करूं देखा भी सेटा काली की पर दिन वी विल डिस्कस दैट तापरे 30th रु अपन टेस्ट सीरीज ता स्टार्ट होबो ऑलरेडी तारो शेड्यूल दे आइ छि तो सेटा सेही हिसाब रे जो माने ऑलरेडी प्रिपेयर्ड अछंती यू कैन गिव द टेस्ट एंड वी विल हैव द discussion okay right so we'll stop here then सर ये जो इकोनॉमिक्स क्लास टा हो जी सर सेटा हमरो शुभ सर नौचंदी ना